Our question is, find the coordinates of the points which divide line segment joining A and B into three equal parts. We have a line segment AB, and suppose P and Q divides AB into three equal parts. P और Q हमारे पास टू ऐसे पॉइंट्स हैं जो लाइन सेगमेंट AB को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सपोज लेंथ ऑफ AB इज A unit, length of PQ is also PQ unit, and length of QB is also A unit. हमने सपोज कर लिया कि AB की लेंथ A यूनिट है, PQ की लेंथ A यूनिट है, QB की लेंथ A यूनिट है. इसका मतलब क्या हुआ, AP कितना हो गया हमारा, AP इज स्मॉल a. व्हाट इज PB? PB इज A प्लस A 2a. तो AP अपॉन PB is 1 upon 2 means P divides AB in the ratio 1:2 for point Q. For point Q, AQ is A plus A 2a. QB is small a. AQ upon QB equal to 2a upon A. This is equal to 2 upon 1. This means Q divides AB in the ratio 2:1. So for point P, ratio is 1:2. For point Q, ratio is 2:1. Suppose this point is x1 y1 and this point is x2 y. Coordinates of x1 are 2, y1 are -3. Here coordinates of x2 are -4 और coordinates of y2 are -6. तो हमारे पास आ गई वैल्यू x1 y1 की, x2 y2 की. सपोज लेट P and Q, let P and Q trisect. Trisect means divides in three equal parts. So let P and Q trisect AB. So AP equal to PQ equal to QB equal to small a unit. Let this implies AP upon PB is 1 upon 2. AP upon PB is 1 upon 2 and AQ upon QB is 2 upon 1. AQ upon QB is 2 upon 1. This means AP ratio PB is 1:2 and AQ ratio QB is 2:1. तो इस पॉइंट के लिए रेशो आ गया आपका 1:2, इस पॉइंट के लिए रेशो आ गया आपका 2:1. अब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे P और Q के बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला. So coordinates of P are given by mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus
ny1 upon m plus n. तो what is m plus n? रेशो इज 1:2, 1 plus 2. m और n की जगह आप पुट कर दीजिए 1 और 2. x2, what is x2? x2 is -4. what is x1? x1 is 2. x1 is 2, comma m plus n. तो 1 plus 2, m की जगह पुट कीजिए 1, n की जगह पुट कीजिए आप 2. y2, what is y2? y2 is -6. y2 is -6, sorry, y2 is -6. what is y1? y1 is -3. so our coordinates are -4 plus 4, -4 plus 4 upon 3, comma -6 और 2 3 जा 6, -6 upon 1 plus 2 3. this is equal to -4 plus 4 0, 0 upon 3, comma -6 और -6 -12 upon 3. so this is equal to 0, comma -4. तो coordinates of P are 0, -4. तो P के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे सिंबल 0, -4. इसी तरह से हम फाइंड करेंगे Q के कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला. बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी विल फाइंड coordinates of Q. by using section formula, by using section formula, coordinates of Q are given by mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus ny1 upon m plus n. put values m plus n for point Q. Q पॉइंट के लिए हमारा रेशो है 2:1. m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1. तो m की जगह आप पुट कीजिए 2 और n की जगह पुट कीजिए आप 1. what is x2? x2 is -4. what is x1? x1 is 2. now come to y coordinate. m plus n, 2 plus 1. what is m? m is 2. what is y2? plus n. what is n? n is 1. so what is y1? y1 is, first put value of y2 is -6. what is y1? y1 is -3. सिंप्लीफाई करिए इसे आप. 2 4 जा 8 plus 2 upon 3. here -12 -3 upon 3. so this is equal to -8 plus 2, -6 upon 3, -12 and -3, -15 upon 3. this is equal to 3 2 is 6, -2 और 3 5 is 15, -2, -5. so these are the coordinates of Q. we again understand this question. in this question we have to find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 3 equal parts. और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें जो लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं.
हमने सपोज कर लिया AP इज A, PQ इज A और QB इज ऑल्सो A। तो AP इज A and PQ is 2A. So AP upon PB is A upon 2A, means 1 upon 2. A upon 2A equal to 1 upon 2. Similarly, AQ upon QB, AQ upon QB 2A upon A will cancel A, so 2 upon 1. So AP ratio PB is 1 ratio 2, AQ ratio QB is 2 ratio 1. तो पॉइंट P के लिए रेशो आ गया हमारा 1 ratio 2, Q के लिए आ गया 2 ratio 1। अब हम क्या करेंगे? By using section formula we will find coordinates of P. What is section formula? mx2 plus mx1 upon l plus n, my2 plus my1 upon l plus n. What is x1 y1 x2 y2? Compare point A with x1 y1. x1 is 2, y1 is -3, x2 is -4, y2 is -6. Put these values, you will get point P. Similarly, we can get value of Q. For Q, ratio is 2 ratio 1.